भारत की पहली रीजनल रेल नमो भारत के टिकाऊ और कुशल संचालन में अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग DBRRTS ऑपरेशंस इंडिया प्रा ली जो DB इंटरनेशनल ऑपरेशंस DBIO की सहायक कंपनी है, मंगलवार को घोषणा करी गई, जिनका उद्देश्य भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल प्रणाली नमो भारत कॉरिडोर के रखरखाव कार्यों की दक्षता और स्थिरता में सुधार करना है। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन NCRTC द्वारा संचालित नमो भारत परियोजना के ऑपरेटर और मेंटेनर के रूप में DBRRTS ने वर्थ इंडस्ट्रियल सर्विसेज इंडिया के साथ साझेदारी की है, जिससे रेल संचालन और अधिक स्मार्ट, सुरक्षित व टिकाऊ बन सके। वर्थ के साथ टिकाऊ रखरखाव या इंडो जर्मन सहयोग पर्यावरण हितैषी प्रक्रिया के माध्यम से डिपो स्तरीय रखरखाव को बेहतर बनाने के लंबे प्रयास की शुरुआत है। DBRRTS ने दुहाई डिपो में वर्थ का REFILLO मत एरोसोल रिफिल सिस्टम अपनाया है। ऐसा करने वाला ये भारत का पहला रेल ऑपरेटर है। ये प्रणाली हानिकारक कचरे और पैकेजिंग को कम करने में मदद करती है, साथ ही कार्यस्थल की सुरक्षा में सुधार करती है। REFILLO मत प्रणाली के अलावा वर्थ DBRRTS को स्वचालित इन्वेंट्री प्रबंधन, मॉड्यूलर स्टोरेज समाधान ORSY मत और बेहतर सप्लाई चेन समन्वय के माध्यम से सहयोग करेगा। लॉन्च के हिस्से के रूप में वर्थ सिस्टम बस ऑन साइट प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक मोबाइल शोरूम का भी प्रदर्शन किया गया। ये भविष्य के लिए तैयार रेलवे के लिए स्मार्ट, टिकाऊ सिस्टम बनाने के बारे में है। बताया जाता है कि साझा जर्मन इंजीनियरिंग उत्कृष्टता की विरासत और भारत के मेक इन इंडिया और स्थिरता लक्ष्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मीडिया की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम इस मौके पर निको वारबानोव CEO डॉयचे बान ECO ग्रुप एवं डॉयचे बान इंटरनेशनल ऑपरेशंस राहुल गुप्ता MD वर्थ इंडस्ट्रियल सर्विसेज इंडिया, प्रवीण गोयल CEO DBRRTS, माइकल कोर्टम CEO DBRRTS और अनिल कुमार अग्रवाल CMO DBRRTS सहित DBRRTS और वर्थ के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। DBRRTS के बारे में DBRRTS दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच नमो भारत सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए NCRTC द्वारा लागू की जा रही परियोजना के संचालन और रखरखाव पार्टनर है। DBIO की सहायक कंपनी के रूप में ये संचालन, एसेट मैनेजमेंट और सुरक्षित, टिकाऊ परिवहन में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञता लाती है। इसके लिए एक डेमो करके बाद दिखाया क्या है, आइए देखते हैं टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस विशेष रिपोर्ट में। Even the because Würth gives PPE also, so you can have the PPEs coming out of the dispensing machine. What's your good name, firstly? What's your name? My name is Nico Varbanov, and I'm the CEO of DB International Operations. It's pretty simple. A railway system is actually a quite complex system, and you need to manage everything about operations, maintenance, and also important, it's about how to manage consumables, to manage C parts, because if one part is missing, you might struggle in the operations, and that's exactly what we want to avoid. So Würth is a company which takes care about, and is very, very innovative about exactly consumables, how to manage them. And one example we have presented today is this Filomat system, where we can have a very simple solution with reusable cans for Rostov, for example, and that also contributes heavily to protect the environment by using one can instead of 1,000, and that is a good. It's for the process of our operations very important, but also to protect the environment. Yes, innovation plays a major role to us, and that's why I think in this Indo-German partnership we bring together the local competencies with our experience and innovations from Germany, and Würth is also playing a part in that one with regards to consumables and also managing C parts in the supply chain. Yes, it will improve the efficiency. It will improve the reliability, that we can comply to our targets, that we want to provide a safe and seamless transport for our passengers. And a railway system is a very, very complex system. So it means you need to do properly the infrastructure maintenance overnight. You need to assure that everything is in place, that the system is running. And Würth is contributing to that with their parts and their competency, like for example in the consumables, and with the Refilomat, it's one great step forward as well. Well, we have of course here in Duhai, where
we are in the moment. The depot, where is the main facility, also the warehousing, but we also have little warehouses at the train stations across the Namo Bharat corridor, and depending on the usage, it will be also stored at the train stations directly for the maintainers or for the cleaners, whoever is requiring the specific materials. So that will be available also there. What is your next plan for expanding this in India? Well, the very, very next plan is, to be honest, to start the operations of stage 3B, stage 4A and 4B of the Namo Bharat corridor here. And we are very much looking forward that this is going to happen in the next couple of weeks. Thank you. That means it has a special code in the button. That means only a Rostov button can be refilled at a Rostov station. So there is no mismatching of liquids. For example, think about it, you have many stations for Brickley or for another Rostov, whatever it is. You cannot really mix the medium because it has a special code on the button, so it's safe. By using it, you should wear a but we will do it later outside. That's just a dry version, so nothing will happen. Price we pay karo. Is case mein you are buying only one bottle and then you are only replacing this can every time. So it gives a lot of advantage in terms of not only efficiency but the cost aspect also. Pocket friendly. Yeah, correct.